कैसे हो स्टूडेंट? आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, जिसमें गैस का एक्सचेंज होता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो रेडी। रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम is a crucial part of the human body that allow for the exchange of gases, primarily oxygen and carbon dioxide, between the body and external environment. This system is responsible for breathing, oxygenating of the blood, and removing carbon dioxide and waste product of metabolism. है ब्रेकडाउन ऑफ के कंपोनेंट्स एंड प्रोसेस। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके हम पढ़ेंगे अब मेन कंपोनेंट्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट है नोज और माउथ। नोज और माउथ का वर्क क्या है? इसका वर्क है एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू नोज और माउथ। द नोज was hair and mucus that help filter warm and humidity of air before the traveler deeper into the system. Then pharynx, throat. This is the passageway that carries air from nose and mouth down the larynx. It is also involves the passage of food and passes the food to the esophagus. उसके बाद आता है larynx, that is voice box, located just below the pharynx. It contains the vocal cords. The larynx serves as the pathway for air to enter the trachea and is also crucial for speech production. उसके बाद आता है trachea, means windpipe, a large tube that connects the larynx to the bronchi. It is made up of C-shaped cartilage rings that keep it open, allowing air to pass through freely. Then bronchi. The trachea divides into two main bronchi, left and right, each leading one of the lungs. These bronchi branch into smaller bronchioles within the lungs. Then bronchioles, small branches of the bronchi that lead to the alveoli. These airway regulate airflow and help in the distribution of air within the lungs. Then alveoli, जहाँ पर gases का exchange होता है. Teeny, air-filled sac at the end of the bronchioles. This is where gas exchange occurs. Oxygen diffuses into the blood and carbon dioxide diffuses out of the blood to be exhaled. Then lungs, a pair of spongy organs where gas exchange occurs. The lungs are divided into lobes, 3 on the right, 2 on the left, and contain the alveoli. That is then diaphragm, a large muscles located beneath the lungs that play a critical role in breathing. Within contracts and expands the chest cavity, drawing air into the lungs. When it relaxes, that pushes air out of the lungs. उसके बाद प्रोसेस, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, हाउ ब्रीदिंग वर्क्स। तो इसका सबसे फर्स्ट है इनहेलेशन, दैट इज इंस्पायरेशन। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड, इंक्रीजिंग द स्पेस ऑफ द chest cavity. At the same time, the intercostal muscles between the ribs contract, raising the rib cage. This decreases pressure in the lungs and causes air to rush in through with the nose or mouth. Then गैस एक्सचेंज, उसके बाद हमने सांस लिया, उसके बाद गैसों का एक्सचेंज होगा. वंस एयर रीच द एल्वेलाई, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर मूव थ्रू द tin walls of the alveoli into the surrounding capillaries, teeny blood vessels. At the same time, carbon dioxide from the blood moves into the
एल्वुलाई टू बी एक्सहेल्ड। सेकेंड पॉइंट है गैसों का एक्सचेंज। देन है एक्सहेल्सन, दैट्स एक्सपायरेशन, सांस का छोड़ना। द डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड, द रिब केज lowers. This increase pressure in the lungs and forces air out of the body through the bronchi and trachea. इससे हम सांस छोड़ते हैं। Important function of respiratory system, सबसे फर्स्ट है इसका गैसों का एक्सचेंज जो कि एल्वुलाई में होगा। Then that regulation of blood pH, the respiratory system is help regulate the pH of the blood in controlling the levels of carbon dioxide, which is a major factor in the blood's activity. Then protection, it filter and traps foreign particles such as dust and pathogens before the can enters the lung. Sound production, the movement of air through the larynx allow for the speech and vocalization. Olfaction, that smell, the nose is also involved in the sense of smell as it houses olfactory receptor. Disorder of respiratory system, बीमारियां, तो इसमें सबसे फर्स्ट है अस्थमा, क्रोनिक कंडीशन है। सेकंड है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। थर्ड है न्यूमोनिया, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। उसके बाद है लंग कैंसर, किसी भी टाइप का लंग कैंसर हो सकता है। दैट ट्यूबरकुलोसिस, दैट TB, जो कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होगा।